أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, today we will be moving on with Ilm al-Sarf, Unit 1, the chapter of verbs. So what do we have in this chapter of verbs? First, inshallah, we will have a quick revision uh, so that all the concepts, inshallah, go fresh in our minds. And inshallah, we will move on to different conjugations of fi'l mudari today. So this chapter, the unit 1, is comprised of verbs and many parts of this unit. We have the first one is introduction, then we have al-madi, then al-mudari, then al-abwab, then we have al-fi'l al-majhul, then we have i'rab al-fi'l, and then we have nafi al-fi'l and amr wa nahi, and then we have ism al-fa'il and ism al-maf'ul, and then we have at-tasrif al-saghir, and then we have at-tasrif al-kabir. So starting with the introduction, this is just a revision for all that we have done until now. So the introduction says that in Arabic, an Arabic verb must contain the following two components, the fa'il and the damir. Then we discussed the example of fa'altum, where fa'al is the fa'il and tum is the damir. So the pronoun attached to the verb can be changed into different forms to show different persons, genders, and numbers. And this is all about al-musarf. This change is called a conjugation or a tasreef. So what is the mawdu? What is the topic of al-musarf? The topic of al-musarf is how to change the sighas properly according to the person, according to the gender and the number of the fa'il, of the doer, of the pronoun that is attached to the verb. Then we discussed a persons. First person means I and we, second person means you, and third person means they, he, she, or they. So if you have first person, it is ana or nahnu. If you talk about the first person, which is called mutakallim, and we have two types of mutakallim, I or we, ana or nahnu. And on the second number, we have the second person, which is you, and this is called mukhatab, not mukhatib. It is the correct word for it is mukhatab. Okay, and we have 6 mukhatabs in Arabic. We have anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. And then the third person, which is al-ghaib, which is called al-ghaib. So it refers to he, she, or they. And we have 6 pronouns for he, she, or they, which are huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. So the first thing to memorize when you are learning al-musarf is that you must memorize all the pronouns in correct order. The correct order is like this: huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, and nahnu. So these are the 14 sighas. These are the 14 damair, the pronouns. We always start from the third person and end at the first person. This is the structure. This is the construction map of al-musarf. You have to take 14 pillars and aligned together in a particular sequence, and always count those sighas, always count those pronouns or those sighas on your fingers. So you assign proper places for proper sighas. Well, how does it help? It helps when you want to find the sigha. Okay, which sigha number it is, and then the thing goes very easy. This was very important to discuss. That's why I give it so much time. We discussed about the genders and the numbers: mudakkar, muannas, mufrad, musanna, and jama. Mufrad is also called wahid. Musanna is also called tasniya. So it's the same thing. And then we learned about the introduction of conjugation. What is a sigha? How many sighas are there? So these are the names of all the sighas: al-ghaib, al-ghaiban, al-ghaibun, al-ghaiba, al-ghaibatan, al-ghaibat. But you can say huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. If this is difficult for you to learn or to memorize at once, you can just say huwa, huma, hum. So the first sigha is huwa, the second one is huma, the third one is hum, the next one, the fourth one is hiya, and then the next one is huma, and the sixth one is hunna, hunna. So this is the easy way to learn the sighas, and it is, you cannot move one step in al-musarf if you don't thoroughly know all of these with the positions on your fingers.
Next one is المخاطب, المخاطبان, المخاطبون, المخاطبة, المخاطبتان, and المخاطبات. But if you cannot remember or memorize all these names at once, you can just say أنت, أنتما, أنتم, أنتي, أنتما, أنتن, أنت, أنتما, أنتم, أنتي, أنتما, أنتن. This is the shortcut. So, right? So this makes things easy, and you can always see the translations here. The translations are mentioned on the left side. So it's all the use. And then mutakallim and al-mutakallim and al-mutakallimun, which is I and we, right? This is very simple. Ana and nahnu. Ana and nahnu. So the first 14 words you need to memorize are huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana and nahnu. Then we had some notes here on the next page. The number and gender cannot be determined in English when you say they or you, but it is very clear in Arabic. So this was the summary: verb, pronoun, conjugation, verb form, masculine, feminine, singular, plural, dual, third person, second person, and first person, inshallah. So this was the summary of the introduction. If anybody has a question, please ask now. Okay, no questions. So first part 1 starts from page 19, which is about al-madi. We'll go very fast on it. The types of pronouns, damir mustatir and damir bariz. A damir mustatir is the hidden pronoun. A damir bariz is an open and written pronoun. So this was the discussion about it. Then we move to the next place, the first conjugation of fi'l al-madi, which was fataha. So fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna. You can also say huwa fataha, huma fataha, hum fatahu. Hiya fatahat, hiya fatahata, huma fatahata, hunna fatahna, hunna fatahna. So when you say the conjugation like this, you relate the pronouns with the af'al. You relate the damair with the af'al. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Hunna. Hunna is feminine, plural, third person, right? They, women, open, right? So, huwa fataha, huma fataha, hum fatahu, hiya fatahat, huma fatahata, hunna fatahna. So, huma is the same, and it makes things easy. And then, when we move to al-mukhatab, so, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna. So, anta fatahta, antuma fatahata, antuma fatahtuma, sorry, antuma fatahtuma, antum fatahtum, anti fatahti, antuma fatahtuma, and then antunna fatahtunna, antunna fatahtunna. You see the pattern? The pattern goes same. Antunna fatahtunna, right? Okay, and then we have ana fatahtu. So ana will always have a dhamma on the verb, on the fi'l madi that follows it, and nahnu fatahna, nahnu fatahna, nahnu ja'alna, nahnu darabna, nahnu khalaqna. You hear this all the time in the Quran, right? So it is okay. So there are two main important points that I am hearing some mistakes from my students. The first mistake is on sigha number 5. So some of my students say they don't read this correctly. The correct word is fatahata. Sigha number 5. Huma. Huma. Fatahata. Fatahata. This is the correct pronunciation. Some of my students say fatahta. Fatahta. Fatahta is not correct. Because when you say fatahta, then it's not sigha number 5, it's sigha number 7. Let me show them together. So this is sigha number 5, which is huma fatahata. Huma fatahata. And this one is sigha number 7, which is anta fatahta. Anta fatahta. Okay. So keep in mind that you have to pronounce this very correctly. Otherwise, you change a fatahata into fatahta, and that's a major mistake. Okay. And then I also heard some of students saying fatahna. So this is fatahna. 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 Okay. Don't prolong it. Don't say na. Otherwise, you change it to sigha number 14, which is fatahna. So fatahna is sigha number 6. Fatahna is sigha number 14. But you cannot mistake it, of course, with fatahtunna because it's a tunna. So sigha number 14, sigha number 12 cannot be mistaken, but sigha number 6 can be mistaken with sigha number 14. Fatahna, fatahna. And that is why we are always very strict on tajweed, because when you say nahnu khalaqna,
That's not correct. That's not a correct sentence. You should say نحن خلقنا na with 2 counts. चलिए जी आगे बढ़ते हैं, काफी देर हो गई इसमें. Okay, so بعث جعل ذهب and رفع. Let's move on to today's exercise, inshallah. These were some of the examples that we did, and I am very happy to know that some of our students, mashallah, they send many conjugations. I want more conjugations from you people. So this was the summary of this lesson. Al-Madi, Zamir Mustatir, and Zamir Bariz. Zamir Mustatir, hidden pronoun. Zamir Bariz, visible pronoun or written pronoun. Then we moved on to the Al-Mudari. Okay, are there any questions about the Fi'l Madi? Everything understood clearly? Fi'l Madi is the foundation. मौलाना अभी आप बोले फेले माजी और कुछ और बोले आप, वो मेरे को समझ में नहीं आया. फेले माजी के अलावा आप कुछ और कह रहे थे, वो क्या बोल रहे थे आप? फेले माजी के अलावा मैं कुछ और बोल रहा था, मुझे नहीं याद आ रहा है. वो वर्ड मेरे को बराबर सुने नहीं आया. गाइड कर रही हूँ तो खैर जान दीजिए, फिर बाद में कुछ ऐसा आया तो मैं पूछूंगी. जरूर जरूर इंशाल्लाह. मुझे याद नहीं आ रहा है आप किस बारे में कह रही हैं. ठीक है. So fi'l mazi is the foundation. Fi'l mazi is the foundation. The foundation should be very, very, very strong, right? If you want to take the building to 100 floors or 200 floors, right? Then the foundation should be deep and very strong. Then the first ground floor that you make is the fi'l mudari. This is how I refer to it, right? So this is the ground floor. When you move into a building, first you go into the ground floor, not into the basement, right? So this is the ground floor, and this is where everything happens. Fi'l mazi is just separate fi'l mazi, but fi'l mudari is going to impact on everything that's following it. Either it is a fi'l amr or fi'l nahi or juhud or nafi or istifham or any type of verb. The fi'l mudari is going to play a central role in it, and that is why fi'l mudari is the most important. Okay, lesson to learn and to understand and to be very clear about it and to be very very diligent about it. You should be very careful, inshallah. So in Arabic, the word al-mudari is used to determine 2 tenses. So this is the first thing. ये पहली बात जो कि बहुत important है, that it refers to 2 tenses. So you don't have to worry about another word in present and another word in future and another word for present continuous and another word for future continuous. You don't have to worry about that. Just use the same word, which is al-fi'l mudari. There are 2 types of present tenses, the present habitual or the present indefinite, which is an action that takes place regularly, like Zaid walks. And then present continuous, which is an action that is taking place right now, which is Zaid is walking. So this was the first part, right? The first expression of fi'l mudari is the present tense. Either it can be present habitual or continuous. Then the second expression is about future tense. So in Arabic, this is known as mustaqbal. Mustaqbal is the name of the mustaqbal means future. So the future tense is also expressed with the same word that is called fi'l mudari. So understanding the sigas of fi'l mudari. So each siga of the fi'l mudari is made up of 4 components. The first one is fi'l itself, then it is the attached zamir to it, the pronoun. Then the third is harf al-mudari, which always precedes as a what do you call it, prefix of fi'l mudari. So there are 4 haruf al-mudari or alamat al-mudari. I refer to them as alamat fi'l mudari, which are hamza, ta, ya, noon. Hamza, ta, ya, noon. Okay, the mnemonic is na'ti or atain or anything. So the point 4 is the 4th component of fi'l mudari is the alamatul i'rab. Okay, this will be discussed later, but let me tell you here that the last letter having any harakat is called i'rab. We'll discuss that later, inshallah, in the lesson coming up. The table below shows the components of al-mudari. You can take a screenshot if you want to. This is like a summary, or I have sent it on the group already. So the first component is of fi'l mudari is the starter or the prefix of fi'l mudari, which can be either hamza, ta, ya, or noon. One of the four. This is how you recognize the fi'l mudari. It starts with hamza, ta, ya, noon. And please don't call it alif. This is not alif. Okay, this is not alif. This is a hamza. So the second part is the verb itself, the root letters, the 3 root letters themselves. Then the next part, the third part, is the pronouns or the damir, which is the expression of the number, gender, and person.
number, gender, and person. Like we say, واحد مذكر غائب, واحد مذكر حاضر, جمع مذكر غائب, جمع مذكر حاضر, تثنية مذكر غائب, تثنية مؤنث حاضر, right? So these are all the pronouns that we discussed. And then the last thing is alamatul i'rab. Now this noon here is called noon i'rabi. We will discuss the details of i'rab inshallah in the lessons coming up. What we need to know right now is that number one is the one of the huruf atain. The second thing is the root letters of the fi'l itself. The third thing is the pronoun or the damir. And the last thing is the alamatul i'rab. In fi'l mudari, 5 sigas have damir mustatir, and then the sigas of ghaib, ghaiba, mukhatab, mutakallim, and mutakallimun. They have damir mustatir. They have hidden pronouns. So let's move on to the conjugation of fi'l mudari, which starts with yaftahu. So when you say yaftahu, it means huwa yaftahu, right? He opens, or he is opening, or he will open. Right? We have 3 translations, remember? He opens, he is opening, he will open. Always it can be either one of the 3 translations, right? Depending on the context, and the translation of fi'l mudari is contextual. It depends on the context and the sentence. So then we can say huma yaftahani, and then we say hum yaftahuna. So you can see the orange noons here, yaftahani, yaftahuna, right? You can see the orange noons. These are all noon i'rabi, okay? And then we can say hiya taftahu, she opens, she is opening, she will open. Huma taftahani, she both are opening, she both open, she both will open, right? And then the next one, number 6, hunna yaftahna. Now this noon right here is not a noon i'rabi. This is called noon niswah. Please write it down if you want to write it down. This is called noon niswah. I should write it here. Niswah. Noon niswah. Yani ladies ka noon. Noon niswah. So this is called noon niswah. This is not noon i'rabi. And this noon niswah will never be dropped or removed. The noon i'rabi can be dropped or removed. Okay. But the noon niswa will never ever change, because this is an alamat of jama muannas. This is a alamat for jama muannas. Okay ji. We move on to the next 6 sigas, which are anta. Mukhatab means anta taftahu, antuma taftahani, antum taftahuna, anti taftahina, antuma taftahani, antunna taftahna, antunna taftahna. So taftahna has the noon niswa. All the others have noon i'rabi, noon niswa, and the others, the orange noons are noon i'rabi. So taftahu, you open, you are opening, you will open. I am talking to a singular male. I am talking to a man. I say anta taftahu, right? Or I just say taftahu, right? So it means the same. It can be either one of the 3 meanings as usual. 1, 2, 3. The present habitual, the present continuous, and the future. So taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna. So here you can see that these sigas are the same. The tasniya sigas are the same, and also the siga number 5 was the same as well. So you have the same word taftahani 3 times in this conjugation. So you have the same word taftahani 3 times in the conjugation of 14. So you have you remain with 11 sigas. You remain with 11 sigas. 11 words. You have to memorize 11 words, not exactly 14 words. And then ana aftahu and nahnu naftahu. Nahnu naftahu. Ana aftahu. I open. I will open. I am opening. Nahnu naftahu. We open. We are opening. We will open. Right? Okay. Then now we have got the conjugation of yab'athu, yaj'alu, yadhabu, and yarfa'u. Inshallah, if anyone can conjugate yab'athu, anyone can try. Inshallah, we are just learning. If you make a mistake, inshallah, I'm here to correct you. So anyone willing to volunteer, inshallah? Yab'athu.
बिस्मिल्लाह। जी जी सिस्टर साबरा, जी ओके, आर यू रेडी? 1 second, sorry. Sister Sabra, I can't hear you. यबअसु यबअसुना No, no let me write. يبعثوا يبعثاني يبعثون. Repeat after me. يبأثوا يبأثون No. يبأثاني Look at the screen. It's there already. يبأثون يبعثون. Then you start with تبعثوا تبأثوا تبعثاني تبأثاني يبعثنا. يبأثنا. Okay, let's do it once again. Yeah. يبعثوا يبعثاني يبعثون. يبأثوا يبأثاني يبأثون تبأثوا تبأثاني يبأثنا. Very good, mashallah. يبأثنا. Okay, once again. Okay. Yeah, once again, please. يبعثوا. يبأثوا يبأثاني يبأثون تبأثوا تبأثاني يبأثنا. يبعثنا. mashallah, very good. أحسنتي. Can you try يجعلوا? Yes. يجعلوا يجعلوني. No. Follow. Look at the screen and follow the pronouns. Okay. Start again. يجعلوا. يجعلوا. يجعلاني. يجعلون. تجعلوا. تجعلاني. or يجعلنا. Very good, mashallah. Okay, next one is يذهبوا. You can try it. Yeah. يذهبوا يذهباني يذهبون. Good. تذهبوا يذهباني يذهبنا. Very good. Are you counting on your fingers? No, I'm looking at the thing that you've written on the board. Okay. Now also count on the parts of your fingers. Okay. You have 3 parts in every finger, and there are 3 fingers in every turn, right? So let's try يرفعوا. Okay. يرفعوا يرفعني يرفعون The fourth figure starts with ta. Yeah. ترفعوا ترفعني يرفعنا. Very good, mashallah, ahsanti. Now inshallah I will be sending some examples on the group, and please try at least 25. Okay, at least 25, not less than that. Okay, you mean 25 verbs? 25 verbs, yes, 25 conjugations of verbs. Okay, at least just the six of them first. Start with 6. This is a better way to do it. Start with the first 6 and then move on to the second 6, because the second 6 are easy. They are very easy. Okay, the real work to be done is here on the first six figures. Mashallah, very well done. Anyone else? Please, Sister Fatima. जी जरूर बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यबअसु यबअसानी यबअसुना तबअसु तबअसानी यबअसना तबअसु तबअसाना तबअसुना तबअसीना तबअसाना तबअसानी तबअसना अबअसु नबअसु. नबअसु. माशाल्लाह, वेरी गुड. अहसनती. आप उसको गिन रही थी फिंगर्स पे? जी. हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंत अंतुम अंतुम अंती अंतुम अंतुन्ना अना नहनु. वेरी गुड. माशाल्लाह. वो जब बिल्डिंग की बुनियाद बनाते हैं तो उसके अंदर वो स्टील लगाते हैं ना, ठीक है? वो स्टील की जगह जो है ये है जो ज़माइर है, क्योंकि सारा इल्म तसरीफ जो है ये पूरा डिपेंड ही करता है ज़माइर पे.
ठीक है, चलें माशाल्लाह। अब नेक्स्ट पे आते हैं यजअलु। यजलो यजलानी यजलुना तजलो तजलानी यजअलना तजलो तजलानी तजअलुना तजअलिना तजअलानी तजअलना अजअलो नजअलो। नजअलु, माशाल्लाह माशाल्लाह, अहसनती माशाल्लाह। अब आप ये बताएं, आप उसके साथ कर सकती हैं दमायर के साथ, जैसे हुआ यजहबु, हुमा यजहबानी, हुम यजहबूना, हिया तजहबु, हुमा तजहबानी, हुन्ना यजहबना, ऐसे कर सकती हैं आप? हुआ यजहबो हुमा यजहबानी हुम यजहबुना हिया तजहबो हुमा तजहबाना तजहबानी हुन्ना यजहबना अंत गुड, तजहबो अंतुम तजहबानी अंतुमा तजहबानी अंतुम तजहबुना अंती तजहबीना अंतुमा तजहबानी अंतुन्ना तजहबना अना अजहब अजहबो नहनु नजहबो। नजहबु, माशाल्लाह माशाल्लाह। सीगा नंबर 7 पे थोड़ा सा आपका टंग स्लिप हो गया था, आपने कहा अंता तजहबु, अंत आपने क्या कहा अंत था? अंत तजहबो। जी सही कहा था, सही कहा था, माशाल्लाह, वेरी गुड। इसी तरह लास्ट सुनाइए यरफउ। हुआ यरफउ हुमा यरफआनी हुम यरफउना हिया तरफउ हुमा तरफआनी हुन्ना यरफाना यरफाना अंत तरफउ अंतुमा तरफआन अंतुम तरफउना अंती तरफइना अंतुमा तरफआनी अंतुन्ना तरफइना तरफे तरफअना, तरफाना सॉरी हाँ तरफाना अना अरफाओ नहनु नरफाओ। तरफअ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अहसनती अहसनती, वेरी गुड। अब जो है आपको बारिश करनी है इंशाल्लाह वॉइस मैसेजेस की, ठीक है? मुझे भेजते जाएं, 100 के हिसाब से भेजें, 100 के हिसाब से, 2 4 6 8 10 नहीं, ठीक है? जितना ज्यादा आप मुझे ये तसरीफात भेजते रहेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएगा, आपकी ग्रामर मजबूत हो जाएगी। जब कुरान मजीद में लफ्ज आएगा सामने, तो उस वक्त इतना सोचने का टाइम नहीं होगा कि आप एक एक सीखे पे जाके उसको ढूंढ के निकालें, ठीक है? तो ये जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सीखे हैं, उनकी लिस्टें हमने आपको वैसे ही दी हुई हैं, आप इंशाल्लाह उस पर काम करें और उसकी ज्यादा से ज्यादा तसरीफ हमें भिजवाएं। और तसरीफ भेजने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर रिमाइंड कराते हैं कि आपको वॉइस मैसेज दबाना है। अच्छा, पहली बात तो ये कि प्राइवेट पे भेजना है, ठीक है, ग्रुप पे नहीं भेजना। आप वॉइस मैसेज को क्लिक करके दबाएं और उस पर डायरेक्ट आप अपनी गर्दान बोलें, आप अपनी गर्दान बोलें, ठीक है? जस्ट से योर कॉन्जुगेशन, डोंट से आउज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सलाम अलैकुम, दिस इज अबाउट और एनीथिंग एल्स, नो नीड टू से एनीथिंग एंड नो नीड टू राइट एनीथिंग एज वेल, कि आप मुझे पहले लिख के भेजें फिर आप मुझे कॉन्जुगेशन भेजें, ऐसे नहीं, नहीं, डायरेक्ट बस एक मैसेज जैसे हम करते हैं ना, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है? इस तरह डायरेक्ट मैसेजेस आप इंशाल्लाह भेजते जाएं। माशाल्लाह सिस्टर, एनीवन एल्स वांट्स टू, और कोई इंशाल्लाह करना चाहते हैं साथ में? चलें और ना इंशाल्लाह। मैं ट्राई करना चाह रही थी, मगर मैं कुछ जरा हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ। नहीं नहीं, ड्राइव करते हुए आप ना करें प्लीज, आई डोंट एडवाइस इट, ठीक है? आप अगर ड्राइव कर रही हैं, आप बिल्कुल सुकून से ड्राइव करें। इंशाल्लाह संडे को वैसे भी हम करेंगे तशरीफ, जब तक आप इंशाल्लाह टाइम निकाल के, और हमारी जो तशरीफात हैं आगे हम बता रहे हैं तशरीफें, तो इंशाल्लाह आप उनको सुने, और अगर आपका दिल चाहे तो आप उनको लिखें, ठीक है? सीधा सीधा जी लिखते अच्छा, जाएं बस, ठीक है? जी ताकि अच्छा। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये पक्का हो जाए। कॉन्सेप्ट पक्का होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे हम बच्चे को टेबल्स याद कराते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, इस तरह याद कराते हैं। इसी तरीके से हम आपको ये तशरीफात के टेबल्स याद करा रहे हैं। जब आप याद कर लेंगे तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड आराम से कर सकेंगे। वरना फिर क्या होगा कि 7 6 क्या था वो ढूंढना पड़ता है, कि भाई 7 6 क्या था, 13 8 क्या था। अब इसको बैठ के हर वक्त हम हिसाब करके प्लस तो नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम इसको एक बार टेबल की तरह याद कर लेते हैं। जब हम इसको याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें रोशन हो जाती हैं, वाज़ेह हो जाती हैं, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। Anybody else wants to try? चलें, let's move on to the next page. I think that we can, what we can do, by keeping the number, gender and person the same. Okay, let's do some exercises first. हमने लास्ट टाइम आई थिंक ये किया था, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, राइट द सीगास एंड पॉइंट आउट द ज़मीर। किसी ने, हमने ये किया था लास्ट टाइम? नहीं नहीं किया, ठीक है? तो इंशाल्लाह आज हम ये करते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है इंशाल्लाह। तो ये एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज थी जो है, एक्सरसाइज 1 जो थी हमारे पास वो ये थी कि आपको ये तशरीफात बोलनी थी। ये था पेज नंबर 26 पे। अब जो एक्सरसाइज 2 है वो भी यही है, राइट द सीगास एंड इन इंग्लिश प्रोनाउन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग हर्फ अल मुदारे एंड प्रोनाउन। जी सिस्टर फातिमा जमील,
जी, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? नंबर 1 है ता। नहीं तो ये तो जरा, हाँ जी, लफ्ज जो है ता से शुरू हो रहा है और दम्मा पर खत्म हो रहा है, तो ये कौन सा सीगा है? ता से शुरू हो रहा है, जमा करो। दम्मा पे खत्म हो रहा है, सीगा नंबर 7 है ना, अल मुखातब का। ठीक है, इसको छोड़ें, खैर इसको आप लोग लिख के मुझे भिजवाइएगा। इसको आप लोग लिख के भिजवाइएगा। हम एक ऐसा काम करते हैं जिसमें बात वाज़ेह हो जाए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, राइट द सीगास एंड पॉइंट आउट द ज़मीर। अब इसमें हो सकता है इंग्लिश में मैं कहीं फंसूंगा, लेकिन आप लोग हैं इंशाल्लाह हमारे साथ। जी सिस्टर फातिमा। तरका। तरकाउना, तरकाउना इज फॉर अंत, जी क्या करें? अंतुम के लिए है तरकाउना। जी अंतुम के लिए है तरकाउन। सीगा नंबर क्या बनेगा? 9। 9। वेरी गुड। अंतुम तरकाउना। और मायने क्या होंगे इसके? मायने मुझे नहीं पता, यानी उस सब सब लोगों के लिए रकाउना का मतलब क्या है? रका रका, तुम सब बात रुकू रुकू करने वाले, हाँ, रुकू कर। अब इसका तर्जुमा उर्दू में बताइए। उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगे आप इसका? तुम सब रुकू करने वाले, तुम सब रुकू करते हो, करते हो। या तुम सब रुकू करोगे, या तुम सब रुकू कर रहे हो। ठीक है, यू ऑल आर बाउइंग, या यू ऑल विल बाउ, और यू ऑल बाउ। BOW कहते हैं ना रुकू को, बाउ डाउन, या नील डाउन कहते हैं, या बाउ डाउन कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। बाउ डाउन कहते हैं आई थिंक। तुम सब रुकू करते हो। ठीक है, सीगा नंबर 9। सीगा आपने पहचाना, बस ये असल बात ये है कि सीगे की पहचान। ठीक है, तर्जुमा आहिस्ता आहिस्ता आप समझ जाएंगी। जी अब ये देखिए, तब आसान है। तब आसान है इज फॉर अंतुमा, जी अंतुमा है, और ये सीगा है 5 5 5 नंबर। 5 भी हो सकता है, और 7 भी हो सकता, नहीं 7 भी हो, 8 नहीं भी हो तब, सकता है। हाँ 8 हाँ, जी जी, भी हो सकता है, 5 भी हो सकता और इसके अलावा सीगा नंबर 11 भी हो सकता है। है। जी ठीक है, हो, जी 5 8 और 11 की कहानी हम अभी छोड़ देते हैं। सिंपल सी बात ये करते हैं कि इसको मुखातब में ट्रांसलेट करते हैं। अंतुमा तब आसान है, क्या ट्रांसलेशन करेंगे आप इसका? सबसे पहले तो जमीर बोले ना, तुम दोनों। अंतुमा यानी तुम दोनों। तुम दोनों। अब अगर आपको इस लफ्ज के मायने नहीं मालूम है कि बास के मायने क्या होते हैं, ठीक है, तो आप इसको बास ही लिख दें। दोनों बास, तुम दोनों बास करते हो, या तुम दोनों बास कर रहे हो। राइट, दोनों या तुम, बास कर रहे हो। राइट, करते ठीक, हो, कर रहे हो, या करोगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है इंशाल्लाह। जी, जी। अच्छा, अब बास के मायने इंग्लिश में कहते हैं रेज। इस रेज यानी उठाना, और बास रफा जो है, का मायने भी रेस है, रफा। बा के मायने है ऊंचा करना, अच्छा, ऊंचा ले जाना। और बासा के मायने है उठाना, यानी हमने दोनों को अ, उठाया। नहीं तुम, यानी, हाँ 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 हाँ, हम तुम्हें उठाने वाले हैं, या हमने तुम्हें, तुम में से एक रसूल को उठाया। वही है जिसने उम्मीयीन में से एक रसूल को मबऊस फरमाया। अब जब हम कहते हैं मबऊस फरमाया, तो ये सीगा चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि उसने उठाया, राइट, उठाना इस मायने में कि मबऊस किया। चले जी, नरफाऊ बताइए। नरफाऊ का तर्जुमा, अब पहले तो सीगा आप पहचाने, नरफाऊ। नहनो, नहनु नरफाऊ, बिल्कुल सही ना, आप तर्जुमा करें। 14 सीगा है नरफा। है बिल्कुल। हमने उठाया, हमने ऊंचा उठाया, किया। हमने ऊंचा किया, हम ऊंचा करेंगे, हम्म, और हम ऊंचा करते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही, करते हैं और हम ऊंचा करते हैं। ये इस वक्त समझने में ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल होगा, एक लफ्ज के 3 तर्जुमे कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब आप कुरान मजीद में पढ़ेंगी, उस वक्त आपको कॉन्टेक्चुअल तर्जुमा फौरन समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। तो उसी तरतीब के साथ उसका कॉन्टेक्चुअल तर्जुमा चलता रहेगा। राइट। यहाँ मैंने एक मिस्टेक लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी, मैं अभी इसको करेक्ट कर लूँ प्लीज।
यहाँ मैंने लिखा हमने ऊंचा किया नहीं, ये सही तर्जुमा नहीं है इसका। हमने ऊंचा किया नहीं, हम ऊंचा कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पास्ट का तर्जुमा हो गया ना। हम ऊंचा कर रहे हैं, हम ऊंचा करते हैं, हम ऊंचा करेंगे। ठीक है। अगर मैं कहूँ हमने ऊंचा किया तो इसके मायने है कि फेल मुकम्मल हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, तो फिर ये फेल मादी बन जाएगा। राइट। अच्छा जी, नंबर 4 तफ्तहना। अच्छा, अब किसी और को इंशाल्लाह चांस देते हैं, देखते हैं कोई और अगर करना चाहे। यस, एनीवन एल्स? अगर कोई और नहीं आता है तो फिर सिस्टर फातिमा आपकी टर्न रहेगी। तफ्तहना अंतुमना का है। अंतुन्ना का है, बिल्कुल, अंतुन्ना तफ्तहना, अंतुन्ना तफ्तह तफ्तहना। आप तर्जुमा कीजिए। तुमने नहीं, तुम तुम कौन? तुम तुम सब ने खोला। तुम सब औरतों ने। तुम सब औरतों ने खोला, या तुम सब औरतें औरतें खोलेंगी। हाँ, ने खोला नहीं ना, ये गलत तर्जुमा है ना। ने खोला नहीं, तुम सब औरतें सब औरतों होंगे ना, औरतें। खोलो, औरतें खोलोगी, खोलती हो, या ठीक है। तो ये इसका जो है तर्जुमा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यल अनानी। रियल अनानी हुमा के लिए है। जी, हुमा के मेल लिए हुमा, यल मेल अनान। मेल। हाँ, रियल तर्जुमा अनानी। मुझे इसका मतलब ये हुमा का दो लोगों तर्जुमा, दो लोगों के लिए है। हुमा का आ, तर्जुमा तुरजा तो हुमा यानी टू पर्सन, टू मेल पर्सन, दो आदमी मर्दों के लिए। दो कौन से मर्दे तुम? खोले। हम लोग जो बैठे हुए हैं वो, या जो मौजूद नहीं है वो? हुमा जो का मौजूद तर्जुमा। जो मौजूद नहीं है, गायब के लिए है। जी, हम उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो दोनों, वो दोनों वो दोनों मर्द या औरतें? वो दोनों मर्द। मर्द क्या कर रहे हैं? इसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम, अनानी क्या है। लाम ऐन नून, लाम ऐन नून। नाम है। लाम ऐन नून से कौन सा लफ्ज दिमाग में आता है? लानत करते हैं। लानत करते हैं, अहसनती। वो दोनों मर्द लानत करते हैं, करते हैं, या करेंगे, करेंगे, या कर रहे हैं। ठीक है जी। वो दोनों मर्द लानत करते हैं, या लानत कर रहे हैं, या लानत करेंगे, या लानानी। चाहे उर्दू हो या चाहे इंग्लिश हो, सबसे पहले आपको उसकी ज़मीर का तर्जुमा करना है। ठीक है। और अलामत मुजारे जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी ज़मीर कौन सी है। राइट। हुरूफ अतैन में से कौन सा है ये। अच्छा जनाब, आगे आगे बढ़ते हैं। यक़रऊना, इसकी ज़मीर क्या है? हम 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 यक़रऊना, सही। हम यकरऊना गायब के लिए है। हम्म, वो सब मर्द, वो सब मर्द सब ठीक है। अ, पढ़ते हैं या क्या, आई डोंट नो क्या। हाँ हाँ, पढ़ने से मुराद है ना काफ रा अच्छा, और हमजा। हाँ, वो सब काफ मत पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, या फिर पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। पढ़ेंगे। शाबाश। पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। इस वक्त क्योंकि हम एक लफ्ज को ट्रांसलेट कर रहे हैं, इस वजह से 3 ट्रांसलेशंस लिख रहे हैं। जब कुरान मजीद में होगा तो एक ही ट्रांसलेशन करेक्ट बैठेगा इसके ऊपर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 तजहबू। जी, जमीर तज़हबू बताइए। अना के लिए है, नो, फॉर मेल। नो, वो तो तज़हबू, अजहबू, वो अजहबू होता है। ओह सॉरी सर। तज़हबू अन, जी जी बोले, सही बोल रही हैं आप। अंता के लिए। जी, अंत के लिए, अंत तजहबू यानी अंता तज़हबू, अंता तज़हबू यानी, हाँ, तुमने तुमने तुम कौन? तुम एक मर्द जी, तुम एक मर्द। अब फेल पे आ जाए। मारा। नहीं नहीं, जाल हा बा, जहाबा, ज़हबा जहाबा यजहबू यानी जाओगे,
तुम एक मर्द जाओगे। जाओगे या जाते हो या जा रहे हो। You one man are going or will go. You one man will go या you one man go. तज़हबु जो है जाने के माने में होता है और जा जो है आने के माने में होता है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 8, तरफ़आनी। तरफ़ा पहले ज़मीर बताएं। तरफ़आनी इज फॉर अंतुमा। अंतुमा, वेरी गुड। जब भी आप एक फेल देखें तो उसके साथ ही सबसे पहले उसकी ज़मीर को रिकग्नाइज करें, उसके फाइल को रिकग्नाइज करें। ठीक है, उसके फाइल को रिकग्नाइज करें। जब आप फाइल को रिकग्नाइज करेंगे तो आपको बाकी सारा मसला आसान हो जाएगा। अब ये अंतुमा जो है ये क्या है? तर्जुमा अंतुमा दो दो अंतुमा तो ये जैसा दोनों के लिए आता है ना, मेल फीमेल के लिए भी आता है ना ये। जी, मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। तुम जी, दोनों या वो दोनों? ये तरफ तो तुम दोनों औरतें। तुम दोनों मर्द या तुम दोनों तो, औरतें, तो वो हम लिखते ही नहीं है ना। ठीक है, तुम जी दोनों मर्द हो या औरतें हो, राइट। अब जी रा फा और आइन, जी। ये क्या है? रफा एन ऊंचा, रफा ऊंचा ऊंचा के बाद करते हो ऊंचा करते हो या ऊंचा कर रहे हो या ऊंचा करोगे। ठीक है, तीनों जी। ट्रांसलेशन होंगे। तरफानी, तुम दोनों ऊंचा करते हो, ऊंचा कर रहे हो या ऊंचा करोगे। अच्छा जी, अब 1 मिनट आप जरा रुकिएगा। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू इंशाल्लाह पार्टिसिपेट इन दिस? कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज आप माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए और बात करें। Yes, अगर आप please. लोग पोजीशन में हैं तो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह, Mm. बात करने की Yes, पोजीशन please. में। जी, कौन है? Mm. मिस्टर साबरा? Ji. ओके, so now this is taj'alna, Taj'alna. taj'alna, right? Taj'alha. So So we it's from Antum. just 1 second please. Yeah, Taj'al. It cannot be antum because it has a noon niswa at the end. Yeah, You yeah. look at the noon niswa at the end, then that pronoun is antunna. Mm. Okay, so you were close Okay. when you said you were close. Okay, you said antum, actually it is for women, antunna. Antunna. तो वो अंती होगा? Anti कैसे होगा? अंतुन्ना है नहीं, ना? अंतुन्ना. Sorry, अंतुन्ना. जी. अंतुन्ना taj'alna. So how do you translate it? How do you translate antunna? You say you all ladies. Women. You all women. You all ladies. Yeah, जी. Now jim, ain and lam means to make. To make. Yeah. So you So all remove the are word to making. and just write the word make, or it can be you Making. will make or are making. Yeah. Is it clear, inshallah? Yeah. Okay, this should be very, very clear, crystal clear for everybody, right? You all ladies will make, or you all will ladies make, or you all ladies are making. Making. जी. ठीक हो गया इंशाल्लाह। चलें, देखिए इसमें कोई अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है ना तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब यहाँ काम खत्म हो गया, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपके लिए एक पूरी बात आप लोगों को याद आ जाए। चलें इंशाल्लाह जी. आगे बढ़ते हैं सिस्टर साबरा। ओके, जी. तस्लहु। Taslahu. Now taslahu can be two sigas, okay? Either it can be number 5 or number 7, right? Either it can Okay. be number 5 or number 7. But usually the translation is in the number 7. So what is the Zamir number 7 is? Anta. Anta. Good. Anta. Anta means you. You male, masculine, singular. You one man. Salaha. I don't know what salaha means. Salaha yani It's right. To make it easy. Huh? It's act righteously.
जी Zainab, you said something. Yes, it's act righteously. Act Salah. rightly. Act And rightly. it was number 4, right? هي تصلح. Acting. Okay. Acting right. Act righteously. Righteously. Act righteously or are You- acting righteously or will act righteously. जी. ठीक है, मेरी राइटिंग को प्लीज आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा. माशाल्लाह. It could also have been Siga number 4. It could also have been Siga number 4. So what is the Yeah. pronoun for Siga number 4, sister Sabra? You just change the pronoun to Heya. Heya. Huma. No, not Homa. It's Heya. G. Yeah. Yeah. Heya But- taslahu. Right? Yeah. It could be feminine singular. Hmm. So Heya will be translated as she. She. Right? Yeah. She acts righteously. She is Hmm. acting righteously, or she will act righteously. G. Right? दोनों तरीकों से ये ट्रांसलेट होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. Hmm. चलें अब आगे बढ़ते हैं. इंशाल्लाह हमारा इंशाल्लाह टाइम हो गया है. अब 2 मजीद हम करते हैं और इसको हम खत्म करते हैं. असअलु. Okay. As'alu is Pronoun. ana. Ana. Very good. You got the file correct. Then you got the translation correct. Okay. Ana. As'alu. I- So I asked. I asked. नहीं. I ask. I am asking. No, I'm asking. I will ask. I will ask. Very good. So never translate it I asked ed के साथ नहीं. Okay, because that's the माजी and this Past is not माजी. Okay, this is not माजी. This is मुदारे. जी. Okay, very good. माशाल्लाह. यरकऊ. ज़मीर. Yarka'u. It is for anta. No, if it is No, anta, no, start with a ta. Yarka'u. Huwa yarka'u, the first one. Huwa. Huwa Yeah. means he. Huwa. He He bows. bound. He He is will bound. bow. Yes, He he will will bow and he is bowing. सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन. अब ये काम आप लोगों को करना है. होमवर्क इस तरह होगा इसका कि फर्स्ट कॉलम आप बनाएं जिसमें क्वेश्चन लिखें. ठीक है, 4 कॉलम्स में होगा काम. हमेशा इल्म सर्फ में काम 4 कॉलम्स में करें. ठीक है, अगर कोई जरूरी नहीं भी हो ना फिर भी एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएं. यहाँ पे आप लिखें क्वेश्चन. इसके बाद आप इसकी लिखें फाइल. फाइल यानी जमीर या प्रोनाउन. इसका फाइल कौन है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, कौन सा? राइट. फिर आप इधर लिखें इसका सिगा. यहाँ पे आप लिखें इसका ट्रांसलेशन. लेफ्ट साइड कॉलम से ट्रांसलेशन लिखें, दरमियान में सीगा लिखें. ताकि इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी. ठीक है, सीगा क्या यानी फाइल तो हम लिखेंगे हुआ हुमा हुमा. क्वेश्चन में हम लिखेंगे जो उनका वो है राकेइना. जी जी. और सीगे सीगा क्या? 14 मैं बता रहा हूँ. सीगे में क्या लिखेंगे? मैं बता रहा हूँ. सीगे 14 होते हैं. वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब. वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब. वाहिद मुजक्कर हाजिर, तस्निया मुजक्कर हाजिर, जमा मुजक्कर हाजिर. वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर. वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. अलगाइब, अलगाइबान, अलगाइबून, अलगाइबतु, अलगाइबतान, अलगाइबातुन. राइट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अलमुखातब, अलमुखातबान, अलमुखातबून, अलमुखातबा, अलमुखातबतान, अलमुखातबात, अलमुतकल्लिम, अलमुतकल्लिमून. ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों तरीके सही हैं. लेकिन जब आप सीगा लिखेंगे, सीगे का नाम जब आप लिखेंगे तो आपके जहन में तर्जुमे के लिए बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी. वैसे ये क्लैरिटी आपको फाइल लिखने से भी समझ में आ जाएगी. समझ में तो आ जाएगा, लेकिन उसको अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ इल्म सर्फ आप उसको लिखें तो ज्यादा बेहतर तरीक़ाकार है. इसके बाद है ये
जिसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग एंड राइट द सीगास इंग्लिश टू अरबिक। अगर आप लोग करना चाहें तो ज़रूर करें, बल्कि ज़रूर ट्राई करें। जो नहीं हो सकता हो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके जवाब आपको बताएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 5 है, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग सीगास व्हाइल कीपिंग द नंबर एंड पर्सन द सेम। ये बहुत आसान है, सिर्फ माजी से मुजारे बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक्सरसाइज 6 है, चेंज द फॉलोइंग अलमाजी टू अलमुजारे व्हाइल कीपिंग द नंबर एंड जेंडर एंड पर्सन द सेम। ये सब कुछ इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके साथ बैठ के इसको कराएंगे एक्सरसाइज को। और अगर आप लोग कहेंगे तो अगर आप बेहतर समझें तो आप इन एक्सरसाइजेस को बैठ के करें और हमें आप होमवर्क भेजें। फिर आप उनकी जो गलतियां होंगी हम उनको डिस्कस कर लेंगे, जैसा आप लोग मुनासिब समझें इंशाल्लाह वैसे हम कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल बन रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो हम आपको जो है बिठा के भी इसको करा सकते हैं जिस तरह आज हमने ये किया, लेकिन इसमें टाइम जाता है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है।